Good morning, students. Okay. Good morning to all of you. As you are aware, today we have a discussion with President, Vice President, BOS Chairman, Vice Chairman for CMA 2025 exams. And that discussion is for the benefit of students, and we are going to take it in live session at 3 p.m. I hope you will attend this. You can interact with them and you will have proper knowledge of how to face the exam. So students, is request to all of you to attend it, and whatever problems you are facing, or you can discuss that with our president, vice president, as I already told you. So let's start with basic rules of accounts. First, yes, who wants to take this revision? Yes, beta, Almas, from start to end. Take a revision, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Take a revision. There are two approaches, traditional approach and modern approach. Traditional approach, personal account, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver and creditor becomes receiver. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Modern approach, asset debit balance, liability credit balance, income credit, expense debit, and capital credit. Okay. Entries, beta, फटाफट बोलिए. Yes, sir. Capital introduce. Cash account debit to capital account. Loan taken. Cash account debit to bank loan. Furniture purchase. Furniture account debit to cash account. Depreciation. Depreciation to furniture. Investment in FD. Investment account debit to cash account. Very good. Expense payable. Expense to expense payable. Prepaid expenses. Prepaid expense to expense. Income receivable. Income receivable to income. Income received in advance. Income to income received in advance. Bad debts. Bad debts to debtors. Credit sales. Debtors account debit to sales account. Cash collected from debtors. Cash account debit to debtors account. Discount allowed. Discount allowed to debtors. Credit purchases. Purchases account debit to creditors. Payment to creditors. Creditors account debit to cash. Discount received. Creditors to discount received. Deficiency. Creditors to deficiency. Very good, beta. Now, balance sheet pro forma. Equity and liability, shareholders fund, share capital, reserves and surplus, non-current liabilities, long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities, long-term provisions, current liabilities, short-term borrowings, trade payables, other current liabilities, short-term provisions, assets, non-current assets, property, plant and equipment, intangible assets, capital work in progress, intangible assets under development, non-current investment, deferred tax assets, other long-term loans and advances, non-current assets, current assets, current investment, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, other current assets. Very good, beta. Then names is AS1 disclosure of accounting policy, AS2 valuation of inventories, AS3 cash flow statement, AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date, AS5 net profit or loss for the period, prior period items and changes in the accounting policy, AS6 removed, AS7 construction contract, AS8 removed, AS9 revenue recognition, AS10 property, plant and equipment, AS11 the effect of changes in foreign exchange rates, AS12 accounting for government grants, AS13 accounting for investment, AS14 accounting for amalgamation, AS15 employee benefits, AS16 borrowing costs, AS17 segment reporting, AS18 related party disclosure, AS19 leases, AS20 earning per share, AS21 consolidated financial statements, AS22
accounting for taxes on income. AS23, accounting for investment in associates in consolidated financial statement. AS24, discontinuing operations. AS25, interim financial reporting. AS26, intangible assets. AS27, um, financial reporting in interest in joint ventures. AS28, impairment of assets. AS29, provisions, contingent assets and contingent liabilities. Contingent liabilities and contingent assets. Okay. Very good, beta. Thank you, sir. Your favorite accounting standards are? AS2, AS10, AS3, and AS16, 19, 13. Means all. Difficult Yes, sir. standard for you? Till now, nothing, sir. Till now, no difficulty. No, sir. How about investment accounting? Yes, sir. It's easy. It's easy. Yes, sir. So what is asset? How to recognize any asset? Probable future economic benefits will flow to the enterprise and costs can be measured reliably. But suppose, beta, now while measurement, how many models are there in S2? What is a model for measurement? Cost model and revaluation model. For S2, AS2, it is measured at cost or NRV, whichever is lower. okay. What about a 10? Cost model and revaluation model. Very good. 13. AS13, long term and current. Long-term investment is recorded at? Cost or market value, whichever is lower. No. Cost minus permanent reduction. There is only one model for long term. No, cost minus permanent reduction. And you are telling about current investment. Long term investments are recorded at cost minus Permanent reduction. and current investment. Cost or market value, whichever is lower. Then what is the recognition criteria for borrowing cost? The interest on loan taken for qualifying assets is recorded. Very good. For qualifying asset till the Till the completion of the construction, till the completion of that. Okay. Of that qualifying asset, when asset is ready to use, you are going to seize that interest capitalization. And what Yes. about leases? Which lease you are recording as an asset? In finance lease, lessee will record the asset. And in operating lease? A lessor will record the asset. And at what value he records the asset? Present value of minimum lease payment or Asset. At what value we are recording it? And when to record it? When to record it is a common for all. Recognition criteria is asset is giving me future economic benefit or cost can be measured reliably. I will record the asset. But now students try to understand, while recording asset, we have a different criteria. Measurement for S2 different. See, for S2 we do not have impairment. Why we do not have impairment? Because instead of impairment, we are taking cost or NRV, which is lower. Okay. But for other accounting standards, for especially S10, when we record asset at cost model or revaluation model, but if I'm getting the economic benefit from that asset, what is economic benefit? Cash flows you are generating. Cash flows you are generating from that asset. Almaz, have you completed your investment decision chapter? yes, sir. So in investment decision, we have different cash flows, correct?
Yes, sir. Even in lease also we calculated that present value. And when we calculate present value of that asset from future benefits, from future cash flows, if I'm calculating present value, and if I'm getting the answer lower than my cost, okay, for example, my book value is 1 lakh and my future economic benefit, whatever cash I'm expecting to generate, see, this is expectation. Asset economic life is also expectation. We cannot record asset more than my expected value. If I calculate present value of that amount, then suppose if answer comes below cost or below book value, and if I sell it in the market and I'm getting lower than the carrying amount, then why should I record asset at book value? This is a principle of accounting standard 28 to record the asset below than book value. यदि कोई भी एसेट मुझे रिकॉर्ड करना है और मेरे बुक में उसकी वैल्यू ये ज्यादा दिख रही है और मुझे वो एसेट से जो बेनिफिट मिलने वाला है, या मार्केट में जाके मैंने यदि वो एसेट बेचा तो मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मेरे बुक वैल्यू से कम है, तो मैं एसेट कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? तो एसेट में कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, बट दैट इज नॉट द डेप्रिसिएशन. कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करना देन बुक वैल्यू इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट. एंड वैसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट. देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज कैरिंग अमाउंट. Carrying amount is my book value, and recoverable amount is higher of net selling price. मतलब मार्केट में जाके आई sold at, that is a fair value in simple language. I cannot say it like a simple language fair value, because fair value might be different from net selling price, because in fair value there are many factors that we have to consider, which you will understand it in the Ind AS 113, how to calculate fair value in real life. We do not have any specific standard for calculation of fair value in our accounting standard list, but we have concept of net selling price, market value, fair value. So in Ind AS we have that definition. In CA final you are going to understand what is the fair value calculation. So students, हाँ बेटा निधि, I will give you that theory, don't worry. तो students, net selling price or value in use. Value in use is nothing but it's a present value of future cash flows. Present value of future cash flows. I will compare with this book value, and if book value is greater, if this amount, carrying amount is greater, then there will be a impairment loss. There will be an impairment loss. So impairment loss is nothing but reduction in the book value other than depreciation. I hope you are clear with the concept. Almas, it's easy, beta. Yes, sir. So what is I think I covered this word impairment in Yes, some sir. of the chapter, Chap- no? Chapter 2. हाँ मैंने Frame. ऑलरेडी ये कवर किया हुआ था. Yes, sir.
beta, I can appreciate those students who can recall names of the chapter. Really hats off to you. You students are doing proper revisions. Those who can recall chapter numbers also. One of the students, she wrote it. I think Pandey madam ने लिखा भी था कि what is impairment. So impairment I already covered it in different chapter, but today it's time to solve illustration based on this. Okay, बहुत बढ़िया बेटा. Uh, yes, if time permits, we will solve illustrations of remaining illustrations of AS13. I If time permits, I will take past examination questions also. Some of the past examination questions. Otherwise, I'm going to share it. We will discuss it in, suppose if the time we do not have time to complete this standard past examination question, I will take it on Pune branch channel. Don't worry, past examination questions related series. If we do not get time over here, okay, तो मैं आपको पुणे ब्रांच के थ्रू लेक्चर दे दूंगा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का. डोंट वरी. ओके. यस. सो स्टैंडर्ड समझ में आया क्या सबको? इफ यू एनी सी बेटा, to create interest in accounting standard is very difficult, but I can see कि स्टूडेंट्स बेटा दे आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली, दे आंसर्ड इट वेरी वेल. मतलब अलमास को देखने के बाद तो मुझे लगता है कि शी इज टेकिंग मैक्सिमम एफर्ट्स. एफर्ट्स आई कैनॉट टेक. और बेटा एक बात मैं वापस से बोलता हूं, इफ यू डिसिप्लिन फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months, then only you are going to get result. Otherwise you won't get a result. Okay, those who cleared foundation, they know how much effort they put for foundation. Almas, Yes, sir. when you attended my first lecture in foundation before how many months? Means from your when your exam is was in Feb, no? January, no? Jan. Yes, sir. January. And then when From September. September. you started from September. You attended full batch. Yes, sir. I think Almas, you were there in my batch, but Yes. you answered at very end, no? Yes, Yeah, sir. you answered from first day. No, I don't think. From November only I started. Yeah, from November onwards, you answered only for 1 month. And then from this intermediate, you started very early. So, Yes. yes, what efforts you put at that time? Can you share that? How many hours you studied to get clear your exam? You cleared in first exam, no? Yes, sir. Huh. I studied after classes. I studied for 5 hours. And if you compare foundation with intermediate, then in last 2 months, last 1.5 month, 2 months, I hope you studied minimum 12 to 15 hours. Yes, sir. Full day was studying. Full day you were studying at that time. Yes. What are the challenges that you face? Almas, would you like to share that? Challenges. Is language is challenge for you? No? No, sir. No. Then recalling is a challenge. No, sir. You wrote everything in your book. You had that formula book, Yes, sir. 100 pages book, Yes, sir. concept book you had. Yes, sir. Okay. How much you scored? 276, sir. 276. And in accounts, 67. why less? Don't know, sir. Okay. No, 67 is also good marks. Don't worry. But my expectation more than 90 this time. Huh? Yes, sir. Okay. Yes, very good, beta. So, and now how many hours you are studying regularly? I attend all classes, and after classes, I study for 2 to 3 hours.
So you are not getting proper time for all subjects. After every class is over, I will complete the. Your homework. Okay. Yes. After every class, you are studying for 2 hours. No, sir. After every class for 1 hour. 1 hour. Okay. And maximum study you required for taxation, Yes, sir. accounts. Which subjects? Tax and mm, law. Accounts. Yes, sir. Accounts, tax, And and law. okay. You are attending all lectures, Yes, sir. including auditing. Yes, sir. I already told you to attend only 4 to 5 subjects, no, 4 subjects one time. No problem. You are managing it. Yes, sir. Okay. ठीक है चलो almost we'll start with the illustration number 1 first and then we will yes same sequence we follow no Yes, sir. first theory or illustration Illustrations. okay चलो read this example A mining enterprise owns a private railway to support its mining activities. The private railway could be sold only for scrap value, and the private railway does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets of the mine. wait now you have one mine okay mine KGF so you have one private railway in that. Why you have private railway? Because this mining activities you want to put down some goods or you want to carry that. So we need private railway in the mine. Okay. Yes, sir. So that private railway you cannot sell it or it does not generate cash inflow independently. Why? Because you are not getting any benefit, extra benefit from it. Just you are carrying some goods. Yes, you first you extract it from the mine, and then you that railway will reach to the destination point. Okay, and where it can unload that goods. So loading and unloading is only the benefit from that railway. So whether railway is giving you some extra benefit No, sir. independently, no. Benefit is that without railway we cannot load and unload goods. The goods know that whatever we extracted. So, friends, here is railway. If I calculate the scrap value, or if I calculate the net selling price, and if I calculate the present value of economic benefit, then whether that railway is giving me inflows more, would you think that it gives more than the carrying amount? Yes, Almas. Do you No, think that sir. no? So carrying amount of railway might be higher than its recoverable amount. If I calculate only railways inflows, so whether railway is working independently or whether railway is working in a In a group. and if railway is working in a group, then we cannot calculate impairment of railway. We can calculate impairment of group of assets. And when your asset is not giving you cash inflows independently, then it is called as cash generating unit. You will calculate impairment of group of assets and not independent asset, because independently it is not giving you benefit. So are you going to calculate impairment of
railway, or are you going to calculate impairment of group of assets? Impairment of group of assets. And what it called as? Cash generating unit. Very good, beta. It is called as cash generating unit. Everyone is clear? तो बेटा जब भी आप अकेली एसेट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, इंपेयरमेंट अकेली एसेट आपको कोई भी कैश फ्लोज नहीं देने वाली है, वो झुंड में आपको फायदा करके देगी. जब झुंड होता है और उसका इंपेयरमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट. सब लोग क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट से कि ये इसका इंपेयरमेंट कैसे करना है, दैट वी विल सी. बट पहले ये समझ में आना चाहिए कि एसेट अकेले काम नहीं करता है, तो हमें ग्रुप ऑफ एसेट्स का इंपेयरमेंट करना पड़ेगा. क्लियर? चलो रीड द आंसर. It is not possible to estimate the recoverable amount of the private railway because the value in use of the private railway cannot be determined, and it is probably different from scrap value. Therefore, the enterprise estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the private railway belongs, that is, the mine as a whole. Yes. So you are calculating the impairment of railway or impairment of mine? Of mine. हाँ. So what is the new word that you understood? Cash generating unit. Very good. CGU. Okay. And how to do impairment? We will do that. Don't worry. Not in today's session. We are going to do it in the next session. Impairment of CGU. Next. A bus company provides services under contract with a municipality that requires minimum service on each of 5 separate routes. Assets devoted to each route and the cash flow from each route can be identified separately. One of the route operates at a significant loss. What do you think? You will calculate impairment of whole buses or bus on each route? Bus on each route. Okay. Read the answer. Since the enterprise does not have the option to curtail any one bus route, the lowest level of the identifiable cash inflows from continuing use that are largely independent of the cash inflows from other assets or group of assets is the cash inflows generated by 5 routes together. The cash generating unit for each route is the bus company as a whole. If an active market exists for the output produced by an asset or a group of assets, this asset or group of assets should be identified as a separate cash generating unit, even if some or all of the output is used internally. Beta, what you understood over here? Whether you can curtail any bus route, you can cut down. Curtail means cut down. So No, sir. no. So lowest level of the identifiable cash inflow for continuing use that are largely independent of cash inflows from other assets or group of assets is a cash inflows generated by 5 routes together. But if one route is in loss, are you going to curtail down that route? Are you No. going to stop that route? No, sir. No. Sir, this route is in loss, huh? Because not yet, that route is not yet properly developed. There are hardly 20 to 30 passengers. They are accepting that route or they travel from that route. So company is in loss.
in that group, that route. But company earns profit in another routes, and they cannot, that service provider, they cannot stop that route due to responsibility, or you can say, um, though this is like a municipal corporation. Okay. So in municipal corporation, if there are buses in losses, whether they stop from any specific route, no. It's their responsibility towards public. So, but in that case, though you that routes are giving you independent cash flows, but you cannot curtail down any operation, and therefore we will keep all routes together as a CGU. So previously, what was the answer? It was together only we can compute. Okay. So previously you answered separate route, separate assets. Now your answer is Uh, what is all the together. asset, whether independent assets will be calculated for every route or whole. Whole. Okay. So all 5 routes together you will consider as a CGU. Got the concept? Yes, sir. Yes. All 5 routes CGU. So this is the conclusion. Easy? Yes, sir. CGU questions I won't take it now. Okay. We will come to illustrations. Okay. Yes. Read this now. Ergo Industries Limited gives the following estimates of cash flows relating to property, plant, and equipment on 31st December 2000x1. The discount rate is 15%. Why discount rate is given? We have to find the present value to What is calculate. called it as in this accounting standard? We call it as to calculate value in use. Write down over there. Why discounting factor is given? To calculate value in use. Residual value of the end of 2000x6 is 1000 lakhs. 2026 we can call it as 22, 23, 24, 25, 26. Okay. So last year, how much is the total inflow? 5000 lakhs. Okay. So in last year, you have 5,000. What is the book value in? Purchase value is 40 lakhs. So 20 is the immediate preceding year. So can I call it as 2019? Yes, sir. Okay. So on 1/1/2019, this value comes to 40,000. We purchase it in 2019. So you can write like this. If you are getting confused, then you can write numbers 22, 23, 24, 25, 26. 26, then 1/1/2020 means 2019. Easy? Yes, sir. Useful life 8 years. Net selling price on 31st December 2021 is 20,000 lakhs. So can you calculate carrying amount at the end of the 2021 first? How to calculate cost of asset?
less depreciation. Now, what is the cost of asset? 40,000. 40,000. And depreciation for how many years? For 1 year. 2 years, no, beta? 2 years. 2 years. Depreciation for, 2 years. because 2019 and you are at the end of, so 19, 2000. 20 and 21. Sorry, it's my mistake. Depreciation is for 3 years. How many years? 3 years. 19, 20, and they want at the end of the 21. So depreciation for 3 years. What is the residual value? 1,000. 40,000 minus 1,000. What is life of the asset? 8 years. And how many years you completed? 3 years. 3 years. So from cost of asset, you deduct depreciation for 3 years. कैलसी देना कैलसी 25,375. तुझ्याकडे आहे का 14,625 you are getting for depreciation, no? Yes, sir. 25 375. is the carrying amount, correct? Yes, sir. Easy? Yes, sir. Now what is the value in use? You will calculate discounting factor for at the rate of 15%. 15%. Then you will take the summation. Tell me. How many digits you will take for 15%? Three 4 digits. digits. 4 digits. Okay, for more accuracy, always take 4 digits. Yes, sir. 1 divided by 1.15. Tell me. 0.8695. 96. Yes, sir. 95 नहीं है 96. Next. 0.7561. Next. 0.6575. Next. 0.5718. Very good. 18. 49. 0.72. No beta. Priyansh beta, they have given that 112,000. Okay. 20xx. And 20xx is immediately before 20x0. So x, if I consider 2000, if on x, if I put the figure 2, okay, तो बेटा 2020 का एक साल पहले मतलब 2019 आएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बच्चा गलती करेगा. सो इट्स बेटर टू पुट डाउन फिगर्स. प्रियांश अंडरस्टूड बेटा? चलिए. देन मल्टीप्लाई, यूज मेमोरी प्लस फंक्शन. 4,08696 memory plus 6,000 into 0.7561 memory plus 6,000 into 0.6575 memory plus 8,000 into 0.5718 memory plus 5,000 into 0.4972 memory plus memory recall. You're getting the same answer? I got 1 second. I'll do again. लास्ट में मैंने कितने मल्टीप्लाई किया? एक सेकंड. ना यस. 4,000, 6,000, 6,000. इतना क्यों फर्क आ रहा है? 5 लाख का फर्क आया. ठीक है.
Yes, whatever answer we are getting is the correct answer. Yes, sir. 19,020. It is value in use, correct? Yes, sir. Net selling price is 20,000. So higher of recoverable amount is higher of value in Well, use and net or selling price net selling price. So value in use is 19,020. 19,020 and net selling price is 20,000. so what is the recoverable amount? 20,000. 20,000. Now what is your carrying amount? 25,375. And what is your recoverable amount? 20,000. So what is your impairment loss? 5,375. And now what is your carrying amount? 20,000. Yes, sir. Okay. Yes, sir. And what is the depreciation now? 20,000. No scrap value. Last problem का देखने दो सिर्फ. No. We'll keep the same salvage value. And now useful life is 5 years. So 20,000 minus 1,000 divided by 5 years. 3,800 is the depreciation. After new value, new carrying amount. One more time. I will explain this one more time. Don't worry. Don't get panic. See, see. Now how you calculated? See, beta. Now institute here has given dates in the X format. 31st December 20x1. So instead of X, I will consider 2. So that will be 2021, 22, 23, 24. So instead of X, you write 2222. Okay, so 2026. Now here this is 2026. Wait for this date. I will tell you at the end. So how it is 1/1/2019. Then you will consider 2021, 2021, 2021, 21, 21, 21, 20 every year 2022 and 2020XX is immediately preceding before 2020. तो 2020 के पहले का प्रीसीडिंग बोले तो 2019. तो क्या आएगा 2019 इज द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर. तो कंफ्यूजन दूर हुआ. So when you bought the asset in 2019 and when you are calculating depreciation at the end of 21, so 19 पूरा आएगा, 20 पूरा आएगा, 21 पूरा आएगा. कितने साल का depreciation रहा हो गया? 3 years of depreciation. Now anyone has difficulty? कुछ बच्चों ने लिखा था सर हाउ 3 years. निशा, निशा नाउ क्लियर बेटा. आप ही ने लिखा था कि सर हाउ 3 years. नाउ यू अंडरस्टूड बेटा.
सर फाइनेंशियल ईयर नहीं बेटा, इधर फाइनेंशियल ईयर होता तो हमेशा 2022-23 ऐसे लिखा जाता है, एंड कैलेंडर ईयर होगा तो ओनली 2002 2003 ऐसा लिखा होगा। बेटा चिरौंदीप, यस, टफ क्यों करती है? यस यू आर करेक्ट बेटा, एग्जाम में नहीं करेंगे। इधर क्या होता है, हर साल ईयर बदलना इज वेरी डिफिकल्ट, तो 10 साल के लिए ये फायदा हो जाता है ना। ओके, यस, यस बेटा, आस्था यू आर करेक्ट। एंड इंस्टीट्यूट ने आपको कंफ्यूज नहीं किया तो कैसे चलेगा भाई, थोड़ा तो कंफ्यूजन करने दो। ठीक है, एग्जाम में यू विल गेट दैट, डोंट वरी, एग्जाम में आपको सब ईयर वाइज दिया जाएगा, बट इधर ये प्रॉब्लम में था डिफिकल्ट, नो डाउट इन दैट। हाँ, अभी ये कैसे किया, समवन आस्क मी, निधि, कैन यू रेज योर हैंड? हाँ बेटा, निधि बेटा, कैलसी पे ये कैसे किया, आप एफएम के क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना? सर ग्रुप ग्रुप वन का करना है। आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो? सर स्पेलिंग, ग्रुप वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ग्रुप 1 के प्रिपरेशन कर रहे हो? हेडफोन निकाल दीजिए 2 मिनट के लिए। यस सर। हाँ, चलो अभी हेलो 1 डिवाइड बाय 1.15 कीजिए। हेलो 1 डिवाइड बाय 1.15। देखो, जब आप लोग आज की वैल्यू निकालते हो, आज की वैल्यू कम रहेगी क्या ज्यादा रहेगी? सर ज्यादा रहेगा। जो चीज आज 100 रुपए में ले रहे हो, कल भी आप 100 रुपए में से कम रुपए में लोगे? सर ज्यादा को मिलेगा। तो फिर आज की वैल्यू कम रहती है ना हमेशा। आप एफडी में 1 लाख रुपए यस सर। डालेंगे तो 1 साल बाद एफडी में से 1 लाख से कम रुपए लेंगे या ज्यादा रुपए लेंगे? ज्यादा रुपए लेंगे। तो ज्यादा रुपए लेंगे तो आज की वैल्यू क्या होगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? कम रहेगी सर। हाँ, कम रहेगी, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है क्या डिवाइड करना है? डिवाइड करना। कोई भी चीज को कम करना होगा तो डिवाइड करते हैं ना। यस हाँ सर। या ना? तो डिवाइड करने का फैक्टर यदि 15% है तो 1 डिवाइड बाय 1.15 करना पड़ेगा। 10% होगा तो आप किससे डिवाइड करते थे, 1 डिवाइड बाय 1? यस सर 1/1.5। 1.1। 1/1.1 करते थे। हाँ, यदि 5% होता तो? 1/1.5। नहीं, 1.05। आपने 50% कर दिया, ठीक है। सो 5% होगा तो सिंगल डिजिट में होगा तो 0.5, 0.6, 0.7, और डबल डिजिट में होगा तो डायरेक्टली वो 1 पॉइंट वो डिजिट, अंडरस्टूड? जी जी सर। तो यस सर। लीजिए कैलसी पे, अभी 1 डिवाइड बाय 1.15 कीजिए और 4 डिजिट्स लीजिए। कितना दिख रहा है आपको? 1 डिवाइड बाय 1.15, फटाफट कीजिए बेटा, इतना टाइम नहीं होता है। सर सर 0.008695 आ रहा है। 0.00 कैसे आएगा, परसेंटेज का साइन थोड़ी दबाते। सिंपल 1 डिवाइड बाय 1.15 करिए। 1 डिवाइड बाय 1.15 इज इक्वल टू, दबाइए। हाँ सर जी। 0.8695। 95, और फिफ्थ डिजिट देखो क्या है। सर 6 है। और फिफ्थ डिजिट 6 है, मतलब 5 या 5 के ऊपर रहेगा तो 4 डिजिट आगे का नंबर लेते, स्कूल में पढ़ाया होगा ये। जी। यस सर यस सर।
हाँ, तो 8696 वापस इज इक्वल टू दबाइए, हो गया सर। वापस इज इक्वल सेवन टू फाइव हाँ, 657 हाँ आगे चलिए, चलिए फाइव आगे चलिए। 497 497 432 लास्ट का। 4972 करेक्ट ना? जी सर। हाँ, अभी इनको मल्टीप्लाई करके मेमोरी प्लस में डाल दीजिए, क्योंकि ये सबकी समेशन चाहिए ना हमें। जी सर। तो मेमोरी रिकॉल, फिर मेमोरी रिकॉल कर देना, ये तो फंक्शन आता रहेगा आपको। ये लीज में नहीं बैठे थे क्या आप? सर आए थे, लेकिन ये वाला क्लियर नहीं हुआ था सर, तो 15% था तो। लीज कंप्लीट हुआ पूरा और आप बोल रहे हो अभी कैसे, मतलब ये लीज टॉपिक में तो ये सब कुछ था ना। चलो दबाइए एम प्लस का बटन और ब्लास्ट में मेमोरी रिकॉल का बटन दबाइए, MRC ऐसा एक बटन होगा, MRC वो दबाना। और मेमोरी प्लस का बटन मल्टीप्लाई करो, मेमोरी प्लस में डालो, मल्टीप्लाई करो, मेमोरी प्लस में डालो। ओके सर। करो फटाफट करो बेटा, बहुत टाइम ले रहे हो आप। हो गया सर। सेम आंसर आएगा अभी? जी सर। पक्का? डरो मत। कॉस्ट ऑफ एसेट कैरिंग अमाउंट पूछा है, कैरिंग अमाउंट कब का पूछा है बेटा? फर्स्टली बात था आफ्टर 2021। 21। और आपने एसेट कब खरीदा था? 1/1/2019। फटाफट कीजिए बेटा। तो कितने साल बाद डिप्रिसिएशन निकालना है? 19 से लेकर 21 तक 3 ईयर। 3 इयर्स, तो 40,000 की एसेट थी। जी सर। और डिप्रिसिएशन कितने साल का माइनस करोगे? सर 3 ईयर का। डिप्रिसिएशन की मेथड नहीं दी है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड एज्यूम करेंगे। जी सर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में 40,000 कॉस्ट है, जी 1,000 रुपए तो लास्ट में मिलने ही वाला है ना। यस सर। तो कितने साल का यूजफुल लाइफ है? सर 8 ईयर है, 8 इयर्स। 2026। और आपके कितने साल खत्म हुए? 3 ईयर। 3 इयर्स। तो अमाउंट देखिए कितना आ रहा है। सर अमाउंट आ रहा है 14,625। और एसेट कितने की थी? सर 40,000 की। तो 40,000 माइनस 14,625 किया तो कितना आएगा? सर 25,375। देखिए, यही तो किया हमने। जी सर। इजी। यस सर। वैल्यू इन यूज जो निकाला आपने, प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना, 19,025 के बदले में। यहाँ पे मैं 19,000। पूरा डिजिट्स लेता हूँ बेटा, 0.8696, 0.7561, 0.6575। बेटा सुनो ना बेटा, ये चेंज कर लो, ये 4 डिजिट्स करो, 5718। और ये 0.48 0.4972। और ये फिगर्स भी आपके, सुनो सुनो सुनो, ये फिगर्स भी आपके बदल जाएंगे हाँ? और ये आपका आएगा 19,020.4। ये भी मैं बदल के दे देता हूँ, जाने दीजिए। तो मेरा भी एक बार ये हो जाएगा, 4,000 इंटू 0.8696, 3,478.4। अलमास बता बेटा फटाफट। Yes, sir. 1 divided by 1. अच्छा समझ में आया बेटा निधि अभी? यस सर, आ गया।
3945. ये कितना था? 0.4 और ये था तुम्हारा 6। हाँ, नेक्स्ट 4574. 4574.4. 457574.4 एंड लास्ट वाला 2486. 24। 86. मेरा कुछ आंसर ही अलग आ गया, मेरा कुछ तो दिमाग में उधर तन क्या है कि 19,020.4। Yes, sir. यू आर गेटिंग द सेम आंसर, नो? Yes, sir. तो 19,020.4 और नेट सेलिंग प्राइस कितनी थी? 20,000, विच एवर इज हायर, Higher. तो वी विल कंसिडर 20,000। एंड व्हाट इज आवर कैरिंग अमाउंट? 20. 25,375। एंड व्हाट इज माय रिकवरेबल अमाउंट? 20,000. 20,000. So my recoverable amount is less than carrying amount. So there is impairment loss. Correct है? Yes, sir. Because my carrying amount is less than Recover. recoverable. Sorry, carrying amount is higher than recoverable amount. Okay. And for the year 2000, now what is the new figure? 20,000. 20,000. And for that year, now depreciation from 22, 20,000 minus salvage value. And what is the remaining life? 5 years. 5 years, because 8 years starting में था, but after impairment 5 साल बचा after 3 years. So remaining life is 5 years. So you will take divide by 5 years and you will get the depreciation amount. Now easy, everyone जिनको नहीं समझा था सबको समझ में आ गया क्या? रोहन साहू, इज इट डिफिकल्ट? आज रोहन भैया नहीं आए लगता है। वो आते पर कहां तो भी छुप के बैठते हैं। यस, अमन इजी और डिफिकल्ट बेटा? प्रियंका इजी? सर इजी है। इजी। अमन इजी ना इजी पक्का? इजी इजी। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज द थिंग यू अंडरस्टूड? कैरिंग अमाउंट इफ ग्रेटर देन recoverable Recover. amount, Impairment loss. there will be impairment loss. And what is recoverable amount? Higher of value in use or net selling price. Value in use and net selling price. So this is a new thing you understood. So we'll take a break. और break के उस पार you are going to solve. Now you only tell me the illustration 2 का recoverable amount, illustration 3 का recoverable this amount, and illustration 4. So I'm giving you exactly 20 minutes, 25 minutes, 25 मिनट में you solve 2, 3 and 4. Okay. So 25 minutes मिलेंगे आपको. तो now I have cleared your all concepts. तो अभी 3 questions you have to finish it off. 5 मिनट ब्रेक भी ले लेना. Okay. So 25 minutes I am giving you from now. और जो बच्चा रिकॉर्डिंग में देख रहा है तो यू कैन स्किप लेक्चर फॉर 25 मिनट्स. अशोक जी रहने दीजिए, टिकटिकी जी रहने दीजिए. ओके. वो उनको सॉल्विंग को टाइम दिया है 10 मिनट एक्स्ट्रा. ओके अशोक जी, 10 मिनट का टाइम उनको सॉल्विंग के लिए दिया गया है और 20 मिनट लगेंगे उनको. ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ब्रेक ले पाएंगे. यस.
गाडी चांगलीच आहे, त्यांना चालणार आहे का खर्ची? मेंटेनन्स खूप काढतो. तुझं एव्हिएटर जेवढं मेंटेनन्स काढते ना ते दुप्पट आहे. काय नाहीच आहे, तेच सांगतोय, त्याच्या दुप्पट तिप्पट पकडतो. वेस्पा आपल्या घरातच गेली तर चांगलंच आहे ना. खर्ची ते तेवढं फक्त तुला सांगितलं नको व्हायला. तू सर नाही सांगितलं दिसायला भारी आहे म्हटल्यानंतर तर ती एप्रिलला खर्चाला मजबूत असतं. सॉरी गाइस, चलो हमारे थोड़ा सुबह सुबह मॉर्निंग में ये हमारे मावशी आए थे. येस, दरवाजा लावून घे ना सगळं. झालं का त्यांचं? ठीक है, रहने दीजिए थोड़ी देर के लिए लाइट. ठीक है रहने दीजिए. चलिए, हैव यू कंप्लीटेड इलस्ट्रेशन 2? एक 3-3:30 पर्यंत येत जावं ना, ते संगमला सांग. 3-3:30 सांगून ठेव त्यांना. हा. यस बेटा रोहन, कहाँ थे आप सुबह से? सर मैं यूट्यूब में देख रहा था. क्यों बेटा? सर वो सुबह सुबह लाइट गुल हो जाती है हमारे घर में 1 घंटे के लिए. ओके चलो, हो गया क्या इलस्ट्रेशन 2 आपका? हाँ सर. आया क्या? हाँ सर. चलो वेरी गुड. निशा बेटा चलो आंसर करिए, क्वेश्चन रीड कीजिए. X Limited is having a plant carrying amount of which is 100 lakh on 31st March 2021. Its balance useful life is 5 years and residual value at the end of 5 years is 5 lakh. Estimated future cash flow from using the plant in next 5 years are for the year ended on 31st March 2022, 50, ठीक है, 31st वो March रहने to दीजिए, रहने दीजिए. हाँ, सो calculate value व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर माय डियर? the 10%. 10%. तो अपन क्या करेंगे, कितने डिजिट्स तक लेंगे बेटा? तो 4 डिजिट तक. चलो बोलिए फिर. 0 9091826475136830 है ना? 6830 and 0.6209. 6209 Yes. मल्टीप्लाई कीजिए. Sir 45.45, 24.792, एक सेकंड ना बेटा, 22. 792 मत लिखिए, 79 लिखिए, दो दो डिजिट्स तक लिखिए, भले कैलसी पे पूरा आने दीजिए. ओके, Okay. लिखते टाइम दो दो डिजिट्स तक लीजिए. 30 into 0.7513, 22.54, 22.4, 13.66, 13.66 ये बराबर है. 12.42. गलत. 15.52. 20 + 5 ना. Sir. Yes, sir. And total 118.86. 121.97 आया मेरा. सर वो मैंने ना सर 3 डिजिट से वैसे ले रखे थे तो नहीं, इसलिए फिर अभी आपको मैंने मैं वही तो बताया कि आप 3 डिजिट्स मत लीजिए. ये सर वो सर ने चेंज कर. कैलसी पे तो पूरा आएगा. एक Yes, सेकंड ना. 30 into 0.8264, 30 into 0.7513 memory plus, 20 into 0.6830 memory plus, and 25 into 0.6209 memory plus.
121.97. 9635 means 97. Yes, And what is the net selling price? sir, 60 lakhs. And what is the carrying amount? Sir, 100 lakhs, no? yes, sir, 100 lakhs, sir. So there is no impairment actually. There Yes, is sir, there is no. impairment. Actually, it is not asked. सर उन्होंने सर वैल्यू इन यूज ही पूछा है. As carrying amount is less than value in use. यस सर. आप लिख के रखो सिर्फ. If carrying amount is less than value in use, no impairment. पूछा नहीं है. Only recoverable amount is asked. Correct? यस सर. ये भी चेंजेस करवा लो. मैं इधर ही करवा दे रहा हूँ. वो सब 4 डिजिट्स तक लेने थे, 3 डिजिट्स तक लिए गए. 4 डिजिट्स कर दो. यस बेटा, वेरी गुड निशा, वेरी गुड. थैंक यू निशा सर. तो अब भी ज्वाइन हुए ना थोड़े दिन पहले? यस सर. सर बोरोइंग कॉस्ट से सर मैंने ज्वाइन किया था. आप क्यों लेट हुए थे इतना? सर हेल्थ इशू थे इसलिए सर. और सर मेरे को पता नहीं था कि जूम पे कैसे ज्वाइन कुछ करते हुए, तो मैं यूट्यूब पे तो आपकी वीडियो देखती थी सर. बाद में फिर आपको पता ही नहीं था जूम पे ज्वाइन करना होता है? सर मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं आपकी ऐप से वैसे लेती थी क्लासेस, लेकिन जूम की सर मेरे को नहीं पता थी. अरे बाप रे. अच्छा, आपने मतलब पुणे ब्रांच से लिया था? नो सर. सर इस जो आप ये क्लास लेते हो ना, तो आपकी ऐप पर यूट्यूब भी पे? आती हैं और यूट्यूब पे भी आती हैं. हाँ, तो आप यूट्यूब से देखते थे पहले? यस सर. यस. वेरी गुड बेटा निशा. यस. राजवीर नेक्स्ट आया बेटा आपको? यस सर. मुझे क्वेश्चन 2 और 4 तो आ गए, पर क्वेश्चन 3 में आधा ही हुआ है और आधे में डाउट है. ठीक है ना, कोई बात नहीं. डाउट है, यही मेरे लिए अच्छी बात है. डाउट होने ही चाहिए. और डाउट है ये हर क्वेश्चन. राजवीर, यस. tax, costing, FM, and accounts. After understanding the concept, first you should solve it. Okay? कोई भी है तो आप लोग पास होने वाले हो. Remember, if faculty is solving, you are not going to clear your exam. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट आई शुड अंडरस्टैंड कि ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा है. देन यू विल बी वेरी केयरफुल व्हेन फैकल्टी इज गिविंग यू गाइडेंस कि ये प्रॉब्लम में क्या इंपॉर्टेंट है. आप इसी तरीके से पढ़ते हो या नहीं? यस सर. पहले मैं दूसरे सब्जेक्ट में, जैसे कि लॉ में भी, मैं पहले से पढ़ के जाता हूँ जो करवाने वाले वेरी हो. गुड, अच्छी बात है. इलस्ट्रेशन नंबर 3. यस, रीड बेटा, पहले आराम से रीड कीजिए. Yes, sir. G Limited acquired a machine on 1st April 2020 for 7 crores that had an estimated useful life of of 7 years. The machine is depreciated on straight line basis and does not carry any residual value. On 1st Okay. April, On 1st April 2024, that is so after carry how many years beta? 4 years. 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24. So after 4 years. 4 years, 7 crore minus 4, 1 crore every year, na? Yes. So what is your carrying amount? 3 crores. 3. Everyone is clear? Carrying amount 7 minus 4. Carrying Yes. amount is 3.
Any difficulty in this? No, sir. No. Then the carrying एक value of second, the हाँ. machine. And 1st April 24 means 24-25 financial year. Okay. So Yes. there is no confusion if you write like this. Huh. Uh, the carrying value of the machine was reassessed as 5.10 crore, Huh. and So the what is the model they are following? revaluation Revaluation model. कितने से ऊपर गया? 2.10 crore. 2.1 in revaluation surplus. Revaluation surplus में कितना बैलेंस है बेटा? 2.1. 2.1. Very good. हाँ. For the year ended March 26, 2026, conditions indicating the impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 79 lakhs. हाँ. Now wait. Now for the March 2026, मतलब 25-26, no? Yes, sir. That is after After 2 years, 2024. after 2 years from revaluation. Yes. Everyone has written after 2 years. But Yes. dates are very important in this question. After 2 years. अभी मुझे एक बात बताइए. Your asset value is 5.1. Yes. इसके ऊपर 2 years का depreciation आएगा. Yes. Remaining life is Uh, 3 years. हाँ 4 years completed, no? Yes. So 5.1 divided by 3. 3 years are remaining. See 7 years. See, I will draw the diagram first. देखो, when you bought the asset, 2020. 1 for 20, 21, 22, 23, 24. At what price you bought the asset? At 7 crore. 7 crore. So what is the after depreciation value? 3 crores. 1 crore every year. So you left with 3 crores. Then you revalued it to 5.1 crore. 5.1 crore. So 2.1 crore in Revaluation surplus. revaluation surplus or revaluation reserve. Yes, sir. Depreciation for 4 years. 4 years. Now what is the remaining life? 3 years. 3 years. Correct? Yes, sir. Remaining life is 3 years. Can I write 24-25 over here? Yes, sir. And 25-26 over here? Yes, sir. So how many years ka depreciation? 2 years. 2 years. Here in starting remaining life कितना था? 3 years. 7 years. Starting में. Starting में 7 years. हाँ. Starting में 7 years. But here remaining life is 3 years. Correct? 3 years. After 2 years. remaining life after Revaluation. revaluation. Diagram समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now it's easy. Yes, sir. 5.1 crore divided by 3 into so 3. here it is
1.7 ना बेटा? Yes, sir. 1.7 depreciation value and after depreciation 3.4 crores. So what is the after depreciation value is? 3.4. How 3.4? Sir, 5.1 upon Minus 1.7 minus 1.7. yes, Correct? yes, So your value should be 1.7. Correct? Out of this 1.7, can you tell me original depreciation? sir. Original depreciation? Sir means Sorry. Not from 1.7. Original value? original value 5.1 crore. No. It's 1 crore, no? It's 1 crore. Why original value is 1 crore? Because now only 1 year is remaining. And if you Okay. provide 6 years ka depreciation from the starting date, 1, Then 1, one 1, 1, 1. Okay? So how 1 crore beta? 7 crore from minus 6 years ka depreciation. Correct? yes, sir. And what is the value due to revaluation? 1.7 crores. 0.7 extra. Correct? Reason? 2.1 crore minus 2 years ka depreciation. Yes, sir. So your original value is 1 crore and your revaluation amount in that asset is 0.7. Correct? Yes, sir. Now, as per this question, you are required to calculate the loss on impairment. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by increase in the charge of depreciation. Normally beta, क्या होता है देखा था आपको. Normally क्या होता है? What is in the balance in your asset? Sir, from beginning or So you have purchased 7 ka asset, 7 crores. correct? Yes. What is the revaluation you have done? 5.1 crores. 2.1, 2.1. 5.1. Yes. And what is the depreciation of your asset till now? Up to 6 years का depreciation है. बराबर है? And you left with 1.7. तो depreciation आपका कितना हुआ? 7 for 7 years, 6 for 6 years. 6 plus 1.7 plus 0.7. नहीं तो आप ऐसा करो. Depreciation 1111 and 3.4. So 4 plus 3.4. Correct है? Yes, sir. 7.4. So 7 plus 2.1 minus 1.7. So 7 plus 2.1 minus 7.4. You left with 1.7. इसमें से आपने बैंक बैलेंस कितना कम किया था एट द बिगिनिंग? 7 रुपीज से डाउन किया था. से येस और नो? Yes, sir. तो 7 का इफेक्ट बैंक बैलेंस कम हुआ. 2.1 रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2.1 दिखता है. कितना दिखता है? 2.1. एंड एवरी ईयर पीएनएल से ओवर 6 इयर्स आपका पीएनएल कितना कम हुआ? 1.4. कितना कम हुआ? 7.4 ओवर 6 इयर्स. अंडरस्टूड द लॉजिक? यस सर. मतलब 6 साल को मिला के. हाँ, 6 साल में 7.4 रिड्यूस हुआ.
So this yes. is your बैलेंस शीट. सी 7 माइनस 7 मतलब 7 का एक एसेट बढ़ा, कैश बैलेंस डाउन हुआ, मतलब माय बैलेंस शीट इज टैलिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे. Yes. रिवैल्यूएशन कितना किया? 2.1. तो एसेट इंक्रीज हियर, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीज इन द हेड रिवैल्यूएशन रिजर्व. एंड देन 6 ईयर का डिप्रिसिएशन जो P&L में 6 साल में डिवाइड होगा. Yes, sir. ओके, नॉर्मली S10 follows this. Normally S10 follows this. But in this question, given क्या दिया उन्होंने? Let's understand. Asset 7, ये एसेट साइड तो सेम आएगा. Revaluation 2.1. And what is depreciation? 7.4. तो 1.7 सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. एसेट का 7 का सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? Bank balance. बैंक बैलेंस रिड्यूस बाय 7. तो ये हुआ. नाउ रिवैल्यूएशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना दिखना चाहिए? 2.1. 0.1. But depreciation for 2 years, only revaluation component, that is 0.7, ये इसमें से कम होगा. 1.4. कितना depreciation? 1.7 is a depreciation. Depreciation. ओरिजिनल कितना? Original 1 crore. 1. और ऊपर का 0.7. सेम हियर 1 and 0.7. अभी Yes. कंपनी पॉलिसी क्या है? 0.7 जो एक्स्ट्रा है ना, दे डिक्रीज फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व. किसमें से डिक्रीज कर रहे हैं? Revaluation reserve. सो दे लेफ्ट विथ 1. 0.7. Yes. 0.7. रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचेगा? 0.7. एंड P&L में डेप्रिसिएशन कितने साल का जाएगा? ओरिजिनल अमाउंट पे 6 इयर्स. नो, Yes, sir. तो वो कितना कम होगा? 6. 6. तो बेटा सी, नॉर्मली इफ वी फॉलो S10 तो हम लोग पूरा P&L में से 7.4 उड़ाते हैं. वी डिडक्ट 7.4 फ्रॉम P&L. बट हियर हाउ वी आर रिड्यूसिंग? From revaluation. 7.4 में से 1.4 फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड 6 फ्रॉम P&L. नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट. Yes, sir. मतलब हम लोग आधा रिवैल्यूएशन रिजर्व से कम कर रहे हैं. आधा नहीं, जितना रिवैल्यूएशन का पोर्शन है उतना, उतना. आधा नहीं. हाँ. ओरिजिनल अमाउंट 11111 फ्रॉम P&L and extra from revaluation. Got the concept? Yes, sir. हाँ. अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं? Now this 1.7 goes down to 0.79. तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ? Impairment loss 0.91 मतलब 91. 0.91. Here also beta, if S10 follows 0.79, तो 0.91 is your impairment loss. Yes. Now what they are talking, अभी 0.91 कहां से कम करो? What is the balance in your revaluation reserve? First use that. तो revaluation reserve में कितना बैलेंस है? 0.7. 0.7. तो डेबिट वो करो. And asset goes down by what? Asset goes by 0.2. 91 लिखा ना बेटा मैंने. हाँ, Impairment loss 0.91. Yes. तो एक्स्ट्रा P&L में डाल दो. एक्स्ट्रा P&L में डाल दो. तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 0.2. 21. 0.21.
0.21। और अभी आपकी बैलेंस शीट कैसे दिखेगी? योर एसेट विल बी शोन एट 0.79, योर रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 बैलेंस, एंड योर P&L ये कितने से इंक्रीज डिक्रीज होगा? डिक्रीज बाय 0.21। गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. हाँ, और यही हमने ऊपर किया होता तो व्हाट इज द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व? Then 2.1। 1 minus तो पूरा वही यूज किया होता, 0.91 टू एसेट 0.91। तो योर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस दिखता था फिर? 2.1 माइनस 0.91, 1.19. 1.19 यदि ऊपर का मेथड फॉलो किया रहता। बट ड्यू टू कंपनी पॉलिसी, फ्रॉम वेयर वी आर रिकॉर्डिंग दिस? From revaluation reserve and P&L. रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले एंड बाद में इफ इट इज कंप्लीटेड देन P&L। चेक द आंसर। कॉस्ट ऑफ द एसेट 7। कितने इयर्स का डिप्रिसिएशन? 4 years. 4 years। तो यू लेफ्ट विथ 3। व्हाट इज योर रिवाइज कैरिंग अमाउंट? 5.1. तो इंक्रीज इन वैल्यू, 2.1. so where you have credited it? Revaluation surplus. Yes. Now 5.1 Yes. out of that 2 years का depreciation 3.4, so what is the WDV 1.7. and what is the recoverable amount? 0.79. So what is your impairment loss? 91 lakhs. 91 lakhs। but wait, अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस है? 2.1। कितने साल का डिप्रिसिएशन माइनस हुआ? 2 years. आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो 1.4, तो बैलेंस इज 0.7 एंड व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस? 0.91 एंड देयरफॉर P&L को कितना डेबिट किया? 0.21। ओके, एंड सपोज इफ दैट सेंटेंस इज मिसिंग, कौन सा सेंटेंस मिसिंग रहता? वो पॉलिसी वाला. हाँ, इफ दैट सेंटेंस इज मिसिंग तो आप पूरा का पूरा डेबिट किसको करते थे? P&L. नहीं सर, सॉरी, रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। अरे पूरा ही हो गया रहता ना फिर। हाँ. 2.1 विल बी द बैलेंस Yes. और पूरा का पूरा हम लोग इंपेयरमेंट लॉस 0.91 रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट दे देते थे। हाँ. गॉट द कॉन्सेप्ट? Yes sir. एक बार वापस। आई नो दिस इज डिफिकल्ट। देखो, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू if that sentence is not given. If that sentence is not given, when your life is very simple, 0 year. So at least now you understood when you change the method. 7 crores की एसेट है। निशा बेटा, रेज योर हैंड। आपको डिफिकल्टी जा रही है इसमें, रेज योर हैंड। आंसर देने से समझ में आएगा। हाँ निशा, Yes, कितने में एसेट खरीदा बेटा? sir. 7 crore में. 7 करोड़ में एसेट खरीदा। कितने साल तक जिंदगी? अच्छा, लाइफ कितने साल था? Sir, life तो 7 years की है. हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल लाइफ था। करेक्ट? तो Yes, एवरी sir. ईयर डेप्रिसिएशन One. अप टू 4 years
1 करोड़ का डेप्रिसिएशन, 7 years लाइफ, तो 1 करोड़ का डेप्रिसिएशन, करेक्ट? Yes, sir. So what is my carrying amount after 4 years? Sir, 3 crore. 3 crores, correct? Yes, sir. And what is your revalued amount? Sir, revalued amount, कितने में रिवैल्यूड? मतलब न्यू वैल्यू. sir, 5.1. वेरी गुड, 5.1 करोड़. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस गया? Sir, 2.1. 2.1. ठीक है, सिंपल. Yes, yes, sir. अभी व्हाट इज योर न्यू वैल्यू? Sir, after 2. 5.1 इज अ न्यू वैल्यू. ओके. Yes, sir. अभी इंपेयरमेंट कब हुआ? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? Sir, after 2 years. 3, 4, 5, 6. सो एट द एंड ऑफ द 6th ईयर यहां पे आपको वापस से बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी. नाउ व्हाट इज योर बुक वैल्यू? सो नाउ डेप्रिसिएशन ऑन 5.1 you provided for remaining 3 years. Yes, sir. So 5.1 divided by 3 years. What is the depreciation amount? 1.7. Sir, depreciation 1.7. amount 3 point. हाँ, Yes, 1.7 for total. 5th year, 1.7 for 6th year. Yes, Okay. sir. So what is your book value now? 5.1 minus 1.7 minus 1.7. Book value is 1.7. Correct? Yes, sir. 5.1 था ना? Yes, Minus sir. 1.7 minus 1.7. 2 साल का Yes. depreciation. The book And now value what is your recoverable amount? Sir, 79 lakh. 0.79. So what is your impairment loss? Sir, 0.91. 0.91. 91. And what is your balance in revaluation? The balance in revaluation 2.1. 2.1. 2.1, no? Yes, sir. Yes. And what is your impairment loss? 0.91. We will adjust 0.91. against it. 2.1 minus 0.91 and balance in revaluation reserve will be 1.19. If company is using normal accounting standard 10, कंपनी क्या यूज करता है? Non-accounting standard. S10. Normally, if that sentence is missing, okay, क्या सेंटेंस मिसिंग होता? Sir, policy of return down revaluation surplus. पॉलिसी ऑफ रिटर्न डाउन सरप्लस में से कम करना. ओके, किस में से कम करना? Surplus में से. हाँ, तो मैंने एंट्री क्या किया रहता? रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट टू एसेट 0.91. आया समझ में? मतलब मेरी Yes, एंट्रीज sir. क्या होती थी स्टार्टिंग में? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7 करोड़ 7 करोड़, करेक्ट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट फॉर 1-5 years. एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन? 1 1. 1. एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू Depreciation. 1 1. ये 5 साल तक, सॉरी 4 साल तक लगातार ये एंट्री पास किए रहते. एंड फ्रॉम 5th और 6th ईयर मतलब ये मेरा हुआ रहता सेम एंट्री 1 1 1 1. ये कहां से कहां तक का ईयर? Sir, 4 years तक. 1 to 4 and 5 to 6 में this amount comes to 1.7 and full amount 1.7. transferred to P&L 1.7. You got the concept? Yes, sir. And then my now impairment loss I will transfer it to P&L.
to asset 0.91, 0.91. And this impairment loss where I transferred, because there is तो revaluation reserve में balance कितना बचेगा? फिर बैलेंस बचेगा 1.19। हाँ, मतलब 2.1 बैलेंस था, तो यस मैं सर, उसमें से रिवैल्यूएशन हमने रिजर्व में ही to impairment loss 0.91 and revaluation reserve balance is 1.19 after this. You understood these entries? यस सर। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं? इफ कंपनी पॉलिसी जो फॉलो कर रही है, देखो ये एंट्री सेम होगी, डेप्रिसिएशन टू एसेट, ये एंट्री भी सेम होगा 1.1, बट बेटा ये 1.7 की जो एंट्री है ना, यस सर। ये एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट 1 जो ओरिजिनल डेप्रिसिएशन है, एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 0.7. गॉट द कॉन्सेप्ट? 0.7। एवरी ईयर ना बेटा 1.7 का डेप्रिसिएशन है। हाँ, ओके तो ओके, एवरी ईयर। एवरी ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट, एवरी ईयर टू एसेट 1.7। तो आपको पूरा का पूरा P&L में ट्रांसफर करना है या ओनली ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर करना है? सर ओरिजिनल कॉस्ट का। हाँ, ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन मतलब 7 करोड़ अपॉन 7 ईयर्स, यस। एंड 0.7 कैसे आया? रिवैल्यूड बाय 2.1, यस सर। एंड हाउ मेनी ईयर्स का डेप्रिसिएशन ऑन दैट? सर 2 इयर्स का। 3 ईयर्स। 3 इयर्स का सर। आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 2 ईयर्स कंप्लीट हुए उसके बाद। ओके। नाउ अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, एंड आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 5-6, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बैलेंस बचेगा? 2.1 बचेगा या 0.7? 0.7 दो बार माइनस होगा। निशा यस। बोलो ना बेटा, रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट था और 2 बार डेबिट किया ना आपने? यस सर, 2 बार डेबिट किया तो ये रिवैल्यूएशन में से सर माइनस होंगे 2 बार का। तो कितना बैलेंस बचा रिवैल्यूएशन रिजर्व में? सर 0.7। हाँ बेटा, सिंपल है ना। 3 साल का डिप्रिसिएशन था, 2 साल का खत्म हुआ तो 1 साल का ही बचेगा। 1 साल का कितना होगा? 0.7। यस सर। नाउ वाइल पासिंग इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री, इंपेयरमेंट लॉस कितने का हुआ? 0.91। फर्स्ट किसको यूज करो? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस है? सर 0.7। हाँ, टू एसेट कितने से डाउन करना है? 91। 91। तो P&L में से कितना यूज होगा? 0.21। 0.2। अभी भी नहीं समझा? देखो बेटा, इंपेयरमेंट लॉस पहले किसके अगेंस्ट उड़ाएंगे? रिवैल्यूएशन के अगेंस्ट। अभी यदि वो सेंटेंस नहीं दिया होता तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना था? फुल 2.1। यस सर। ओके, सर तब सर रिवैल्यूएशन में बैलेंस रह जाता 1.19 अगर हमारा ये पॉलिसी हाँ नहीं दी होती। हाँ, लेकिन अब यदि इन्होंने आपने पॉलिसी दे दी तो इधर अभी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व में अभी भी बैलेंस दिखेगा कितना? 1.19 बैलेंस दिखेगा और इधर। इसमें कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस दिखेगा? सर इसमें जीरो। वो 0 हो गया। जीरो हो गया। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन 2.1 में से
2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर इंपेयरमेंट लॉस माइनस किया है, मतलब 0.7 और फिर 0.7, और इसमें आपने 2.1 में से डेप्रिसिएशन ठेंगा 0, तो आपने सिर्फ क्या माइनस किया? नो डेप्रिसिएशन, ओनली इंपेयरमेंट लॉस 0.91। सर ये जो हमारे रिटर्न डाउन पॉलिसी में आपने जो ये इम्पेयरमेंट लॉस 0.7 3 ईयर का करा सर, जिससे 4 ईयर के उसके बाद जो 3 ईयर हमारे बचे थे उसका आपने माइनस करके 2 साल का कराया फिर मतलब बेटा हम। सिंपल है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते टाइम, ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन P&L में ट्रांसफर करो, और जो रिवैल्यूड अमाउंट है उसको आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट दो। तो आपका 7 ओरिजिनल था एंड 2.1 रिवैल्यूड था। इसको डिवाइड बाय 7 से ट्रांसफर करेंगे, इसको डिवाइड बाय 3 से ट्रांसफर करेंगे, इतना सिंपल है। अभी भी नहीं समझा? सर आगे। तो पहले केस में इफ दैट सेंटेंस इज मिसिंग, तो आपने किसको यूज किया होता? सर रिवैल्यूएशन का ही। एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने से कंटिन्यू हुआ रहता? 2.1 से ही आगे गया होता ना। यस सर। अभी इसमें अपना 2.1 कंटिन्यू होगा या रिड्यूस होगा? सर ये रिड्यूस होगा सर, इसमें से कितने हम से? सर 0.7 मतलब 2 बार हम 2 ईयर का निकाल के फिर हाँ, करेंगे। मैंने दोनों चीजें बताई है बेटा, दोनों। विदाउट रिवैल्यूएशन, debiting depreciation is charged to P&L, and if depreciation is charged as per company policy. अभी एग्जाम में यदि ये सेंटेंस मिसिंग है, ये सेंटेंस मिसिंग है, तो आपका आंसर क्या आया होता? सर 0.91 आपने वन किसको डेबिट दिया होता? सर 1.19 को हमने दिया होता। हाँ, अरे बेटा एसेट में कोई बदलाव नहीं है, सर एसेट तो एसेट में हमारा कोई बदलाव नहीं है। एसेट की 1.7 वैल्यू 0.79, एसेट में बदलाव नहीं है। जो इंपेयरमेंट लॉस आपका नीचे आ रहा है ना, वो किसको डेबिट देना है ये पूछ रहे वो लोग। इंपेयरमेंट लॉस यदि पहले किसको यूज करो इंपेयरमेंट लॉस करते टाइम? सर रिवैल्यूएशन के यूज करेंगे तो 2.1 था सर हमारा हाँ, जो तो लॉस पूरा था, तो अभी उसमें से 2.1 रहने दो ना, पर अपने को 0.91 चाहिए, है क्या उसमें बैलेंस? सर बैलेंस है तो हम माइनस कर लेंगे इसमें से अपने हाँ, रिवैल्यूएशन में से। तो यूज करेंगे। अभी दूसरी, मतलब वो सेंटेंस दिया है, उसके वजह से रिवैल्यूएशन में कितना बैलेंस बचा? सर 0.7 बचा। तो उतना ही हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट दे सकते हैं। तो ऊपर का किसको डेबिट देना पड़ेगा? सर पीएनएल में दे देंगे हम वही अपनी दिया, ओरिजिनल अमाउंट का। ओरिजिनल नहीं रे बेटा, P&L को डेबिट देना है, ओरिजिनल भी नहीं ना, छोड़ दो ओके अभी। ओके। दो देखो, एसेट इतना ही आने वाला है, एसेट 0.79 ही आने वाला है, एसेट को फर्क नहीं पड़ता है। और अब जो इंपेयरमेंट लॉस को डेबिट देना है ना, उसको क्या करना है इसके बारे में चर्चा हो रही है ओके सर। रिवैल्यूएशन के केस में। तो पहले किसको यूज करो? सर पहले हम रिवैल्यूएशन को यूज करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन यूज करो और उसके बाद P&L को यूज करो। पर रिवैल्यूएशन में भी अगेन दो वांदे हो गए कि रिवैल्यूएशन का बैलेंस नीचे आया यस सर। कंपनी पॉलिसी के वजह से। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन को पहले यूज करो, और रिवैल्यूएशन का बैलेंस खत्म होने के बाद पीएनएल को यूज करो। यस, ओके, यस सर। यस।
Beta, simply it is given. Yes, Sangeeta Vani ji, can you raise your hand? Simply it is given, Sangeeta ji. Yes, unmute yourself. Yes, sir. Simply it is given whenever there is impairment loss, first use revaluation reserve. Okay. Okay? Okay. If that sentence is not given, the companies they written down revaluation by the increased depreciation. What is the increased depreciation amount? Sir, 1.7. 1.7 is not increase amount. Increase amount is only 0.7 because Point 1 seven. crore is Okay, sir. already there in the depreciation. Okay, sir. So extra 0.7 increase amount is extra 0.7. They are debiting revaluation surplus. What is the balance in revaluation surplus? 2.1 2.1, sir. minus what is the increase amount for depreciation 0. of fifth year? 0.7. 0.7. And what is the depreciation of sixth year? 0.7. Extra 0.7. So you left with 0.7. 0.7. And when you are doing impairment 79 lakhs, your impairment loss is 0.91. So you use first revaluation reserve. Okay, sir. And what is the balance left for impairment after utilizing impairment? 0.2, sir. 0.21. And for that purpose, you use Profit. profit and loss account. What the concept? Yes, sir. Yes. Now it's clear. And if this Yes. sentence is missing, Okay, sir. in that case, your impairment loss, you will debit it whole 0.91 to revaluation reserve. Okay, sir. Why? Because in that case, my balance in revaluation reserve is 2.1. What is the balance in revaluation reserve? 0.2. 2.1. No, but I have not debited depreciation. No, in that case. Okay, sir. Okay. Okay. So my debit is not to revaluation account. Revaluation reserve is showing 2.1 balance. And what is my impairment loss? 0.91. 0.91. 0.91. So whether my revaluation reserve is sufficient to absorb that loss? No, sir. Yes, na beta, my revaluation reserve balance is 2.1. My impairment loss is only 0.91. So my revaluation reserve is sufficient to absorb that loss. If that sentence is not given, if a sentence is missing, so Yes, what sir. is the balance in revaluation reserve in that case? Sangeeta ji, I Yes, will sir. continue with 2 point. See, Sangeeta, starting mein I have an asset of 7 crores. Yes, sir. I provided depreciation 1 crore for 4 years. 4 years. 1 rupee depreciation for 4 years. Then I left with 3 rupees balance. Okay, sir. Then I increase it by 2.1 in the 4th year. At the beginning of 5th year. 5.1 is the balance. Now this is revaluation surplus, no? Now second effect of this, where I carried second effect 2.1, revaluation reserve balance is showing 2.1. One is added in the asset and second one is resource and surplus 2.1. Are you getting this? Yes, sir. Are 2.1 asset I increase, no? Yes, sir.
So second effect I have to give. Where to give second effect? See, I here my asset side 7 crores is my asset value starting May. Sangeeta, please tell me fast. Sir, 7 first, crores is 7 asset crores is first. se- listen carefully. Ask me question afterwards. See, please give me an answer. 7 crores is my asset value, correct? Okay, sir, yes. What is the depreciation of first year? 1 crore. 1 crore. Where to give second effect? One effect is deduction from the asset, and one effect is P and L. Are you from science background? No, sir. So do you don't know how to give depreciation effect? Sir, Depreciation P and L के डेबिट में जाएगा ना बेटा. ये first, it will be first from transferred the to asset and P&L. P and L. Second year same, third year same. Deduction from the asset and P and L account debit. Reduction from the asset and P and L account debit. Got the concept? Yes, sir. So after 4 years, what is the balance in the asset? 3, sir. 3. Now what you have done? You increase that to 5.1. So now 2.1 you added it in the asset. Yes, sir. And where to give the second effect? Revaluation. Revaluation reserve. Then my balance sheet will tally, no? Yes, sir, yes. So now what is the balance in my revaluation reserve? 2.1. 2.1. Now what is my asset value? 5.1. Then again I transfer depreciation. What is the depreciation now? 1.7, because now life is 3 years. Remaining life is 3 years. 7 years out of that 4 years completed. Remaining life is 3 years. Yes, sir. Got the concept? Yes, sir, yes, sir. Now remaining life is 3 years means 1.7. Now normally what we do, we transfer this 1.7 to P&L account. Yes, sir. And my revaluation reserve balance will be same. Normally. Yes, sir. So 2.1 I will continue. 2.1 I will continue for how many years? For 2 years. Now what is the balance in my asset? 5.1 minus 1.7 minus 1.7. So my balance in asset is 1.7. Yes, sir. Correct? Yes, sir. Now this 1.7, my new recoverable amount is how much? 1.7. 1.7 is a book value. Recoverable amount, recoverable is given in the question. What is the recoverable amount? 1.7 is the after depreciation. Okay. What is the recoverable amount? 79. 0.79. So should I increase the asset or reduce the asset? Sangeeta ji, I have to reduce the asset value, no? Yes, sir. By what amount? 79. Point? 79. So what is the reduction in the asset value? This is the new carrying amount. So what is the reduction? 0.91, sir. 0.91. It is called as impairment loss. Now you are getting it. Yes, sir, yes. Now this 0.91 I have to reduce. So I have to reduce it from revaluation reserve. If nothing is mentioned, first use that. Okay, sir. First use revaluation reserve. See, this policy is we followed. If company is not following this reduction policy, so what is the entry for that 0.91? 0.91 entry will be asset goes down to 2 asset and revaluation reserve will be debited. Got the concept? Yes, sir. Now what is the company policy? When they provide depreciation, they transfer 1 rupee in P&L only.
1.7 is the depreciation amount, no? Yes, sir. But out of that, they transfer only 1 rupee in the P&L. So extra 0.7 they deduct it from. Revaluation reserve. So 0.7 for first year and 0.7 for the second year. So how much revaluation reserve is now remaining in revaluation reserve? 0.7, sir. 0.7. And what is your impairment loss? That will be same. 0.91, sir. 0.91. So first you use which reserve? Revaluation reserve. So what is the balance in revaluation reserve now? 0.7, sir. 0.7. So extra where to give debit? Profit and loss. So profit and loss 0.21. So if that sentence is missing, Okay. whole 0.91 you debit to revaluation reserve. Okay, sir. And now that due to that sentence, what is the balance in revaluation reserve? 0.7. 0.7. So first you will utilize that and extra 0.21 you utilize from P&L. Perfect. Now clear? Yes, sir, please. Thank you. Thank you, sir. निशा अभी तो क्लियर हुआ क्या नहीं बेटा? सर क्लियर हो गया सर. अच्छा चलो ठीक है, जान निकाल दिया आप लोगों ने आज मेरी. लास्ट मिनट तक एक्सप्लेन किया है क्या कॉन्सेप्ट है. तो फर्स्ट यू शुड यूज, अभी भी क्वेश्चन है यार, क्या बोलो अभी इतना समझ, फ्रस्ट्रेशन है ये पॉइंट. अभी क्या क्वेश्चन है? Sir, we have to revaluation reserve created out of revaluation of that asset only, or we can use revaluation surplus created out of any asset for that asset only. For that asset, you have to maintain record for that asset only. Sir, in case we follow S10, what will happen to revaluation surplus after 7th year? If asset is sold, it will be transferred to P&L. That will general reserve को transfer हो जाता है. और क्या क्वेश्चन है? अभी भी क्वेश्चन होंगे तो बेटा जेन्युइनली, मतलब अभी तो इंग्लिश में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया. एंड इफ स्टिल यू आर कंफ्यूज, क्या बोलूं मैं, चलो छोड़ो. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. जाऊन ये ना पटकन, परत उशीर होईल, घरी जायचंय. घेऊन ये म्हटलं मोबाईल, मोबाईल घेऊन आणि हे घेऊन ये माझं शेक, दोन पटकन ये ना जाऊन. X Limited purchase a property, plant and equipment 4 years ago, 150 lakhs, and depreciate 10% per annum. At the year end of the 4th year, it has revalued the asset 75 lakhs and return of losses on revaluation to profit and loss account. However, the date of revaluation, the market price is 67.5 and expected disposal cost. So net selling price निकालते time, net selling price, if you are going to calculate it, you will deduct that. So 67.5 minus 3, this will be 64.5. What will be the treatment in respect of impairment loss on the basis of fair value for revaluation purpose is determined by market value, and value in use is 60 lakhs. Okay. So now in this question, company does not have any new method of revaluation. So they are not reducing depreciation. So 150 at the end of the 4th year,
So 150 minus depreciation of 4 years. Depreciation of 4 years is 10% per annum. So 15, 15, 15, 15. 15 into 4, 60. So what is the balance in the revaluation? No, balance is not there. So 60 is your carrying amount. Now what is your revalued asset? From carrying amount, your revaluation is 75. So this is reduction in the asset. And reduction in asset is rupees 15. And this 15 will be entry for this. See, when asset is increased, we transfer it to revaluation reserve. But when asset is decreased, we debit P&L account as per prudence concept. I already explained it in the S10. नीचे आया तो P&L को डेबिट देना है 75. Now revaluation date पे what is the recoverable amount? Recoverable amount is higher of 64.5 and value in use. So recoverable amount is 64.5. And this is called as impairment loss. This is called as impairment loss. 75 minus 64.5 rupees 10.5. Rupees 10.5 is the impairment loss. And 10.5 will be impairment loss. Okay. So whenever there is a decrease in the value, debit P&L, and increase in the value, credit revaluation surplus. Okay. Better don't get confused. These problems are really easy. आपको सिर्फ see now 3 and 4, what is the new concept? 3 and 4, impairment in case of revaluation. 3 and 4 is impairment if revaluation. पर ये revaluation थर्ड में क्या था? अपवर्ड साइड. एंड फोर्थ में क्या था? इफ रिवैल्यूएशन, बट रिवैल्यूएशन नीचे गया होगा तो, विच इज सिंपल वन. If it is going down is P&L debit, no balance in revaluation reserve. Okay. And revaluation reserve mein balance is there in case of upward revaluation. Impairment in case of upward revaluation and impairment in case of downward revaluation. And first two problems, calculation of values in case of impairment, basic impairment, simple impairment. Okay, no revaluation. चलो, कुछ डाउट्स है तो बोलिए. आई डोंट थिंक कि अभी डाउट आने चाहिए, बट स्टिल. रोहन, एनी डाउट बेटा? नो सर. आज पूरा समझ में आ गया बेटा आपको? यस सर. S13 से इजी लगा या डिफिकल्ट? सर इजी. एंड लीज? नहीं, लीज से थोड़ा, मतलब अभी लीज करा नहीं प्रैक्टिस, तो इसलिए उसको करना क्या पड़ेगा. प्रैक्टिस करने रोहन, कुछ है ही नहीं उसमें. आज तो बहुत देर तक एक्सप्लेन किया है ऑल कॉन्सेप्ट्स. तो टेक अ स्क्रीन, नहीं पहले तो S13 के स्क्रीनशॉट ले लीजिए. S13 थ्योरी. प्रियंका यस बोल देना बेटा. आस्था यस बोल देना. आस्था? Yes, sir. हाँ. स्क्रीनशॉट 1. Yes, sir. 2 days बहुत ज्यादा होमवर्क है. 2.
Yes, sir. 3 ग्रुप पे शेयर कर देना बेटा. Okay, sir. Yes, sir. 4 Yes, sir. और 5 बस इतना ही लिखना, ये मत लिखना. Okay, sir. Taken, sir. फॉर्मेट पता है ना आपको? Yes, sir. फॉर्मेट के लिए जरूरत नहीं है फिर. ओके, नेक्स्ट. S28 की थियोरी लिख लोगे? Yes, sir. हाँ, पूरा मत लिखना, CGU तक. 1 मिनट. स्क्रीनशॉट 1 एंड फोकस वाइल राइटिंग. Yes, sir. Taken, sir. 2 वेट. हाँ, Yes, sir. 3 Yes, sir. 4 Yes, sir. 5 Yes, sir. CGU मत लिखो, ये नेक्स्ट लेक्चर में. CGU इज नेक्स्ट लेक्चर. एंड फिनिश प्रॉपरली. यस, आंसर भी लिख के दो ना. यू वांट इन माय फॉर्मेट? Yes, sir. 1 मिनट. S19 का इंडेक्स बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में देता हूं. 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट. इजी और डिफिकल्ट था बेटा आज का? Easy था, sir. खुद से आ गया? नहीं सर, इलस्ट्रेशन थर्ड में प्रॉब्लम आई थी पहले. 1 वेयर यू विल राइट दिस? 400 पेजेस बुक, सर. 400 पेज बुक. और पहले का पूरा? Completed, sir. Done, sir. Done, sir. जो नोटबुक इज कंप्लीटेड ना बेटा? Yes, sir. अप टू डेट है पूरा? Yes, sir. विथ पेज नंबर्स? Yes, sir. Taken, sir. Yes, sir. सबसे ज्यादा नोटबुक कौन सी भर गई आपकी? सर इसी की भरी है, अकाउंट्स की. अकाउंट्स की ही? यस सर. क्यों, बाकी सब्जेक्ट नहीं लिखते आप? सर टेक्स्ट में तो बुक से ही मेल करना होता है, सिर्फ इलस्ट्रेशंस ही होती हैं. आप सेम मेथड फॉलो नहीं करते हो टैक्स में? नो सर, वहाँ पे हाईलाइटर से कर देती हूँ बुक में तो. ऐसा मत कीजिए, लिखिए प्रॉपरली. देन कौन सा पेज नंबर चल रहा है आपका इलस्ट्रेशंस का? बताइए जरा मुझे. 400 पेजेस बुक का सर 239. है? इतना हो गया? यस सर. वाह. एंड कॉन्सेप्ट बुक का? कॉन्सेप्ट बुक का 56.
अच्छा, कॉन्सेप्ट बुक मतलब इजी जा रहा है रिवीजन को। राजवीर, आपने पेज नंबर डाले बेटा? यस सर। आपका कौन सा पेज नंबर चल रहा है 400 पेजेस बुक का? सर थोड़ा 195। क्यों, कुछ मिसिंग है? यस सर, वो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर 11 में थोड़ा सा टीवाई के बाकी है, तो वो कर लूंगा ये हफ्ते में। देखो, बैकलॉग रहेगा तो रह ही जाता है। यस सर, इसलिए इधर कर। तो बैकलॉग नोट डाउन करके रखो कि ये आफ्टर क्लासेस तो भी फिनिश हो जाए। हाँ सर, ओके। लिखा है। यस, वेरी गुड बेटा। सर एक प्रियंक, बोलिए डाउट। बोलिए बोलिए। सर दो डाउट है। एक चैप्टर 11 में कि अगर रिफंड ऑफ टैक्स दिया है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे कि टैक्स अकाउंट में लिखेंगे? दोनों में जाएगा ना, टू कैश है तो अकाउंट्स में भी लिखेंगे टू कैश, और इनकम टैक्स पेड यहाँ पे भी लिख देंगे ना फॉर्मेट में भी। हाँ यस सर, वो सर कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो एक क्वेश्चन में आया था रिफंड ऑफ टैक्स। अच्छा, रिफंड तो इनफ्लो दिखेगा बेटा, वो तो फिर बाय कैश दिखेगा। हाँ, ठीक है। और सर एक दूसरा भी डाउट था। हम्म। AS10 का एक क्वेश्चन है। कल उसमें एक बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसमें 3 मंथ्स के लिए विथ होल्ड हो गया, बाद में 3 मंथ्स के बाद फिर से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, पर उसके लिए एक हमने 6 लाख का एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोलर लगाया, तो वो बिल्डिंग अकाउंट में ऐड होगा कि नहीं होगा? मतलब बिल्डिंग के वैल्यू में ऐड होगा? अभी सब पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी तो नहीं होगा, फिर हो जाएगा। इट इज नेसेसरी पार्ट। और 3 मंथ्स इज ड्यू टू, ये होगा सपोज स्ट्राइक है या ये कुछ है, तो फिर नहीं ऐड होगा। ओके। तो ऐसा लिखा था कि जो सोशल एक्टिविस्ट थे उन्होंने बंद करवा दिया था तीन नहीं, फिर तीन नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ओके। सर वहां पर स्ट्राइक की वजह से फिर हम माइनस कर देंगे वो वाले ईयर्स को। हाँ, उतना इंटरेस्ट माइनस कर देना है। ओके सर। सर AS13 में डाउट है सर। बोलिए। सर जो प्रोविजन फॉर डेमिनेशन हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में माइनस भी करेंगे और P&L में शो कर देंगे। नहीं तो टैली कैसे होगा? एक एसेट डाउन किया तो डेबिट, अभी जैसे इंपेयरमेंट में किया वैसा ही होगा ना, P&L कोई डेबिट होगा ना। नहीं सर, जैसे प्रोविजन फॉर डेमिनेशन है उसे हम लायबिलिटी साइड दिखाएं या एसेट में से डिडक्ट कर दें डायरेक्टली? तो अभी आप कौन सा फ्लक्चुएशन अकाउंट निकाल रहे हो, तो लाइबिलिटी साइड बताओ। बार बार होने वाला है तो, पर एक ही बार हो रहा है तो P&L में ही जाएगा। ओके सर। सर एक ओके। लाइन थी, द कॉस्ट। मतलब देखिए, एक सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट 100 की थी। देखो, कभी भी ना बेटा कुछ नहीं आया ना ऐसे ये कर लेने का। ठीक है। अभी उन्होंने दिया है कि 100 रुपए का एसेट 40 से कम हुआ, तो 40 से कम हुआ तो 60 रुपीज बैलेंस बचा। ठीक है, मतलब आपने P&L में डेबिट दे दिया। अभी दूसरा ऑप्शन, ये बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है, तो आपने क्या तैयार किया, एक फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार किया, एंड फ्लक्चुएशन रिजर्व में -40 बताया। सर दिस समझ इज अ में आ रहा है? ऑप्शन। ठीक है। अभी परमानेंट है तो बार बार थोड़ी होने वाला है, वो एक आध बार होगा ना। डायरेक्टली माइनस कर देंगे। P&L को डायरेक्टली डेबिट दे देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। सर एक और लाइन गिवन थी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, द कॉस्ट ऑफ एनी शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ कंपनी द होल्डिंग ऑफ विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द राइट टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एडेड टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, राइट टू होल्ड? देखो, जब आप लोग कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोन भी लेते हो ना, तो आपको उधर का शेयर होल्डर बनना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो ही आपको लोन मिलता है। बिकॉज लोन इज गिवन ओनली टू मेंबर्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी।
तो उसके लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा शेयर्स एक्वायर करने के लिए, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऐड करना है, ना कि P&L में बताना है। आया समझ में? ओके सर। वो प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो इनकर किए रहेंगे एक्सपेंसेस वट एवर, तो वो सर इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा। सर जैसे हम बोरिंग कॉस्ट में अगर कोई लोन लेना है तो उसके लिए जो भी हम पेपर हाँ वर्क हाँ, करते हैं। इस पे वर्क करते वही। अंडरस्टूड? यस सर। रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन सिंपल लैंग्वेज। बेटा अमन, यस बोलिए। Nothing, sir. I'm clear with everything. बेटा मैं हैप्पीली बोल सकता हूं कि यू पीपल आर डूइंग प्रॉपरली। तो एक ही मिनट। हाँ ठीक है। तो यस बेटा, माय नेक्स्ट सेशन है। तो सम क्वेश्चन आई विल टेक टुमारो बेटा, ऑन मंडे प्रियंका, बिकॉज आई हैव टू ट्रैवल टू 10 किलोमीटर्स, और मेरा नेक्स्ट सेशन है, इट्स ऑलरेडी 9:45। तो हम लोग परसों मंडे को देखते। एंड प्लीज do your best, and all questions, all answers you write it, not questions, answers you write it in your notebook, 400 pages book mein, and concept book mein you write all these important points. Thank you, take care, and ha, today don't miss that session at 3 o'clock. Thank you. Okay, sir. Thank you. Yes. Ashok ji बंद कर दीजिए। yes yes yes। अरे संगम नहीं है, कैसे करते हैं एक बार देखना। अजित सर आप कर रहे हो क्या? सर मैं कर रहा हूँ। कर दीजिए, अजित सर कर रहे हैं। स्पॉटलाइट चेंज कर दीजिए अशोक जी। अजित सर करवा रहे हैं ना? थैंक यू।